Bangladesh has now become the 19th country to have bilateral trade with India in Indian rupees. This move essentially removes the role that the US dollar has in trade and reduces the cost of trade for both the sides. আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি জুনেদ আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলিও অফিশিয়াল আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले करते যাচ্ছি সবাই দেখবেন आशा करी सबाई देखमें भालो लगबे आज बात करने वाले हैं कि एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान का मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान ट्रेड रुपए और टके में करेंगे। पहले हमने ये खबर दी थी कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि बांग्लादेश अपना रूप और पावर प्लांट की जितनी भी पेमेंट है रूस को वो चाइनीज़ करेंसी में देगा, लेकिन एक दफ़ा फिर भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान में जो ट्रेड होती है वो रुपए और टके में होगी। तो मज़ीद भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी हैवी। Our next story is about what might be the fall of the dollar empire. Bangladesh has now become the 19th country to have bilateral trade with India in Indian rupees. This move essentially removes the role that the US dollar has in trade and reduces the cost of trade for both the sides. How far will the US dollar spiral down this hole, and how many more countries are replacing the dollar in their trade? After months of deliberations, India and Bangladesh will now trade in taka and rupees without the inclusion of any third currency. And why is this change taking place? The exchange in India's rupee and Bangladesh's taka will reduce the cost of settlement. It will also lessen the stress on the forex reserves. And the new arrangement will also promote trade, as the two countries plan to trade in their own currencies. Reports say the countries will also initiate a dual currency card. Travelers would be able to load these cards with rupees or taka. The exchange rate would be decided based on the two currencies rather than working with the exchange rate of the dollar. But you see, this is not a new move by Bangladesh. The country also decided to pay Russia with Chinese yuan to settle payments for a nuclear plant. The over $12 billion nuclear plant project was mostly financed through a Russian loan. Bangladesh did not use dollars due to the sanctions on Russia. Since paying in rubles was not feasible for Bangladesh, both the countries planned on carrying transactions in yuan. This came amid increasing de-dollarization efforts by various countries, and the BRICS nations that were opting for a common BRICS currency. The story of the dying dollar, as many are calling it, started much earlier when countries like Iran abandoned settling trade in dollar with China and Russia. Saudi Arabia opted to give up petrodollar and begin accepting petro-yuan. Brazil abandoned the dollar and said that it would be trading in local currency with China. The BRICS nations are still being urged to make an alternative currency to settle cross-border trade. Is the US dollar truly losing its hegemony? Especially after Russia saw sanctions following the invasion of Ukraine, several countries, like I mentioned, are giving up trading in dollars. Countries are now promoting the local currency for trade. Trading in the local currency also helps reduce the exchange costs, essentially, which are usually high while settling in dollars. And India stands as a significant example regarding the de-dollarization in trade. The country will be using its rupee to start overseas trade with over 19 countries. Countries like Russia, the UK, Sri Lanka, Germany, Kenya will also trade in rupees, leaving the dollar behind. The US dollar, also known as the king of currency, became the official reserve currency of the world in 1944, and this gave America a disproportionate amount of influence over other economies. Reports say that America could have used the imposition of sanctions as a tool to achieve foreign policy goals. But now it has almost been proven that not everybody likes to play by America's rules, especially countries like Russia and China that look forward to halting the dollar's dominance in the markets.
And this is what is known as de-dollarization. The process essentially of substituting the American dollar as a currency used for trading oil and other currencies. Replacing the US dollar in trade has been gaining momentum in recent years. The IMF has been witnessing many central banks no longer holding dollars as reserves in the same quantities as they earlier were. And experts say that de-dollarization would reduce the global dependence on the US dollar and the US economy. And this could help mitigate the impact of America's economic changes on another country's economy. And nations will also be able to reduce their exposure to currency fluctuations and interest rate changes. De-dollarization would help improve the economic stability and potentially erase the risk of a financial crisis. Will the US manage to come back as the so-called king of currency? तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि 19 ममालिक के अंदर बांग्लादेश ट्रेड कर सकता है रुपए में और टके में। आज देखें तो भारत बहुत आगे निकल चुका है और साथ ही साथ बांग्लादेश को मिलाकर वो दुनिया के अंदर डॉलर को मात दे रहा है और एक दफ़ा फिर टका और बांग्लादेशी और भारतीय रुपए के अंदर ट्रेड की जाएगी। तो भारतीय मीडिया यहाँ पर यह दावा कर रहा है कि बांग्लादेश ने भी भारत का साथ देने का ऐलान किया है और भारतीय रुपया और बांग्लादेशी टका 19 कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल होगा। 19 ममालिक के अंदर ट्रेड की जाएगी भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टके के साथ। तो ये डॉलर को बड़ा झटका होगा और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को मजबूत करेगा। और हम देखें तो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश और भारत की ट्रेड बढ़ती हुई नज़र आएगी। अगर नई दिल्ली हुकूमत इसमें कोई चालाकी ना करे, इसमें कोई धोखा ना दे, तो बांग्लादेश और भारत मिलकर अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देखें तो बांग्लादेश का टका भी मजबूत हुआ है जिस तरह भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर का मुकाबला करने के लिए भारत और बांग्लादेश एक पेज पर आ चुके हैं। अब देखना होगा कि ये साथ कितनी देर तक चल पाएगा। क्या बांग्लादेश और भारत इसी तरह से 19 ममालिक में ट्रेड कर पाएंगे? आप इस हवाले से क्या बात करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।